Assalamualaikum dear students. Today I am going to continue our chapter Gravitation. And today I am going to teach about mass, weight, etc. So first of all, हमने equations of motion पढ़ी है. 3 equations of motion. सबसे पहली equation हमें आती है v is equal to u plus at. Second one है s is equal to ut plus 1 half of at square. और थर्ड वन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, क्योंकि यहां पर हम एक्सेलरेशन के बदले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करते हैं, सो जो उन 3 इक्वेशंस में एक्सेलरेशन है उसको हम रिप्लेस करते हैं, उस a को, उस एक्सेलरेशन को हम बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g से रिप्लेस करते हैं. सो ये जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे बनती हैं? वो बनती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी के बदले वो बनती है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर जो है वो बनती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. इसी तरह से थर्ड वन जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वो बनती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. यानी हमने रिप्लेस किया एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से. ये होगी एक बात. दूसरी बात, व्हाट इज मास? हमने ये पढ़ा पहले भी. मास क्या होता है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है जो मास होता है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया. और इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन state, for according to Newton's first law, that is also called as law of inertia. So what is inertia? Inertia is the property of an object to oppose change in state. For example, an object is in rest, it will continue or it will tend to remain in rest, and an object in motion will continue in a uniform motion in a straight direction until an external force acts on it. So it's called inertia. So mass is a measurement. Mass is the measurement of inertia, and inertia is the opposition to the change in state. So more the mass, more will be the inertia. Lesser the mass, lesser will be the inertia. And this mass, it's a constant quantity. It will remain same whether we are at Earth, whether we are at Moon. The mass will not change. It will remain as it is. It is a constant quantity. So mass is the measurement of inertia. Another term we usually use, that is weight. We mostly use these terms mass and weight interchangeably. So हम कभी mass और weight को एक ही बात, वो भी वजन है, ये भी वजन. लेकिन जो weight होता है, वेट होता है, जैसे आपको पता है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. हर एक चीज को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है. सो हमें पता है जो ये फोर्स होता है, जो ये फोर्स होता है वो बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. एफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. एफ इज इक्वल टू एम ए. And here is F is equal to mg, because the force by which Earth attracts an object, the force with which Earth attracts an object towards itself is known as weight. So weight is the force, and force is got F is got m into g, and weight is a force. So that weight, if we want to know what is the weight, we have to know the force of attraction, and that force of attraction or that weight W is equal to m into g, product of mass and gravity. So this weight, and we know that the g जो होता है acceleration due to gravity, its value is constant. Acceleration due to gravity, it's an acceleration and its value is constant. That's 9.8 meter per second square. So g is a constant. Weight is equal to mass into g, mass into acceleration due to gravity. As gravity is a constant quantity,
So mass is directly proportional to the weight, or weight is directly proportional to mass. Mass and weight are directly proportional to each other. So if mass increases, weight will increase, and if weight increases, mass will increase. So mostly we use these terms interchangeably, but this weight is the force of attraction. Weight means force with which Earth attracts an object. So weight is called mass into acceleration due to gravity, that is W is called, and this weight, it is denoted by the letter W, and mass is denoted by M, and acceleration due to gravity is denoted by G. So weight is called mass into M into G, mass into acceleration due to gravity. What are the units of weight? So unit of weight is Newton. Unit of this weight is Newton because it's a force, and unit of mass is kilogram, and there are some other and bigger units, you know. So what will happen to the weight of an object if we go or if we move to the moon? As I already told you that mass is a constant quantity, but weight is a varying quantity. Weight is the force. Weight is the force. As we know that weight of an object is weight of an object on moon is equal to 1/6 of weight on the Earth. If we have an object with 6 kg weight at Earth, it will be 1 kg at moon. So this force of attraction decreases at moon, so its weight also decreases. So this is mass and weight. Mass is constant and weight is variable. So it is mass and weight. Then what is thrust and what is pressure? What is thrust? Thrust is the force exerted by an object perpendicular surface of that object. So thrust is the force. थ्रस्ट एक फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर एट 90 डिग्रीज एक्ट करता है सरफेस, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. लेकिन प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स exerted by an object per unit area, that we call as pressure. And thrust is also a force exerted, but it acts as perpendicular to the surface at 90 degrees. That is perpendicular. So pressure is called force divided by area. Pressure is called force divided by area. Pressure is called force is thrust also. So pressure is called thrust divided by area. Thrust divided by area. So pressure is equal to F divided by A, where P is pressure, F is force, A is area. Force and area, they are inversely proportional. Force and this area are inversely proportional. That is, if area increases, pressure will decrease, and if area decreases, pressure will increase. So in the same way, if this pressure and force are directly proportional. If the force increases, pressure will increase. If the force decreases, pressure will decrease. But if the area decreases, pressure will increase. They are inversely proportional. Pressure and force are directly proportional, but pressure and area are inversely proportional. So what is SI unit of pressure? As SI unit of mass is kilogram, SI unit of weight is Newton, and SI unit of pressure. What is the SI unit of pressure? We know that by expression, pressure is equal to force divided by area. What is unit of force? Unit of force is Newton. What is unit of area? Unit of area is meter square. This unit of area is meter square because two dimensions are involved in area, length and breadth. So for one length, unit is meter. For another, it is meter. So meter into meter is meter square. So unit for area is meter square. Unit for force is Newton. So unit of pressure becomes force divided by area. That is Newton per meter square. So unit of pressure is Newton per meter square, or it's called in the honor of this Blaise Pascal. This unit is known as the unit of pressure is known as Pascal. Unit of pressure is known as Pascal. So 1 Pascal is called 1 Newton per meter square.
in day-to-day life activities or everyday life, we can pose many examples of this pressure and thrust. So if we have a brick and we keep it horizontally, अगर हम horizontally किसी brick को रखते हैं, so it will cover more area. It will cover, for example, we have a brick, it is of 9 inches length. We will keep it like this horizontally. It will exert less pressure because it will cover more area. Pressure will be less. And if we keep it vertically, it will cover less area and it will exert more pressure. So horizontal bricks, they exert less pressure because they cover more area, and vertical bricks, they exert more pressure because they cover less areas, and area and pressure are inversely proportional. In case of horizontal laying of the bricks, the pressure decreases because area increases, and by keeping vertically these bricks, the pressure increases because the area decreases. So another example is that a camel can run in the sand. A camel can run. एक ऊंट है वो एक रेगिस्तान में दौड़ सकता है, भाग सकता है. क्यों? क्योंकि उसके जो हूफ्स होते हैं या उसके जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, they are broader. The feet of camel are broader, so they cover more area. They cover more area and they exert less pressure on the sand, and they can run on the sand because they cover more area and they exert less pressure on the sand. In the same way, we have seen the tractors which we use in plowing the fields, etc. हम जैसे जमीन जोतने के लिए या इस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं. उनके पीछे वाले जो टायर्स होते हैं, जो आगे वाले जो टायर्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ट्रॉली के आगे जो लगे होते हैं. तो वो टायर्स इतने बड़े क्यों होते हैं? वो या ब्रॉड होते हैं, वो चौड़े होते हैं. क्यों चौड़े होते हैं? क्योंकि उनको कीचड़ में चलना पड़ता है या ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में चलना पड़ता है. सो वो क्या करते हैं, वो लेस प्रेशर डालते हैं. वो क्या करते हैं, वो एरिया ज्यादा कवर करते हैं और प्रेशर कम डालते. इस तरह से वो आगे मूव कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप एक नेल लोगे, एक कील लोगे, कांटा लोगे, उसको आपने किसी में स्ट्रक ए नेल. जब आप उसको मारोगे, हथौड़े से मारोगे कील को, एक साइड जो इसका एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, तेजदार वाला होता है. सो जब हम उसको हथौड़ा मारते हैं, क्योंकि वो एरिया उस लकड़ी में कम लेता है, जब हम उसको पीछे से हथौड़ा मारते हैं तो वो चूंकि वो एरिया कम लेता है, प्रेशर उसमें ज्यादा एग्जर्ट होता है, तो इजीली पियर्स करता है, उस लकड़ी के अंदर जाता है. सो इसी तरह से आपने देखा होगा जो स्कूल बैग्स होते हैं, जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं, उनके स्ट्रैप्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं. क्या होते हैं? चौड़े. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर पड़ेगा आपके कंधों पे. ठीक है, और हम इजीली उस बैग को कैरी कर सकते. सो एरिया बढ़ गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया. अगर वो स्ट्रैप्स होंगे, जो उसके स्ट्रैप्स होते हैं वो नैरो होंगी, तो वो ज्यादा प्रेशर डालेंगे क्योंकि एरिया वो कम करेंगे. सो ये एक और एग्जांपल है प्रेशर की. इसी तरह से जो हमारे पास चाकू होता है, घर में जो चाकू होता है, हम उसको तेज करते हैं, शार्पन करते हैं. जो शार्पन करते हैं, हम किसी को तेज करते हैं, धार बनाते हैं उसकी. जब हम किसी चीज पे लगाते हैं वो जल्दी काटता है, तेज. अगर हम ब्लंट एक लेंगे, ब्लंट नाइफ, जिसकी धार जो तेज ना हो, वो इजीली किसी को चीज को काटता नहीं है. क्यों? क्योंकि जो तेज धार वाली चीजें होती हैं, शार्पन जो होती है नाइव्स, वो क्या करती हैं, वो नाइव्स ज्यादा प्रेशर डालती है किसी चीज के ऊपर और वो इजीली उसको कट करती है. अगर ब्लंट हो तो उनको वो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेंगे और प्रेशर कम डालेंगे और इजीली वो चीज कटेगी नहीं. सो इट्स ऑल अबाउट टुडे. हैव ए नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज.